Okay, perfect. What's up? I welcome all of you to Margin Virtuals. This is our first lecture for taxation. And before starting, I just want to ask one thing that what do you think? Taxation is a theory subject or a practical subject? What do you think? What have you heard from your friends? The theory subject or a practical subject? Inclusion of both, sir. It's a mixture of both. Okay. So I'm just keeping the chat active. If you are unable to unmute, then you can put your message in the chat. Yes. So it's a mixture of both. Someone is saying it's theory. Okay, one answer practical. Okay, so let me tell you in the first lecture itself that taxation is not a theory subject. Taxation is purely practical. और ये जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो प्रैक्टिकल चीजें सब कुछ हम समझने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर सेशन सो वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ फन इन दिस बैच direct tax as well as indirect tax. Now, before moving ahead with the content, let me first introduce myself. People who don't know me, I will just introduce you in short because you are going to spend some good amount of hours with me. So, पहले छोटा सा introduction about myself. My name is Professor Amit Mahajan. I am a chartered accountant and LLB. As far as my work experience is concerned, I was working in EY. If you have heard about this name, EY Big Four, in taxation department, and I left EY and I'm completely into teaching now, and I have my own tax consultancy also. So I do my tax consulting. So this is the brief background, and I left the corporate job because I wanted to come into this amazing field of teaching. So I hope that so ये मैंने सब क्यों बताया I was in taxation department, so just to tell you that you are in safe hands. Taxation subject है, tax consulting करता हूँ. I am going to tell all my experiences which I had during those 6 years. I was working in that company for 6 years. जो experiences है वो सब experiences I'm going to share with you guys. You are going to get a practical exposure on this subject and it is going to be amazing. I'll tell you कैसे लोग झोल करते थे. बाद में आई विल ऑल्सो टेल यू दैट वो जो झोल थे वो कम करने के लिए हाउ डिड द गवर्नमेंट कम अप विद द प्रोविजंस टू कैंसिल दोज लूप होल्स, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं. एंड वन थिंग, before we understand any kind of any section, I'm going to tell you the history of that section कि ये section क्यों आया. If you understand the history of that section, no, then you will not just be ready for the exam, you will be in the path of becoming a taxman, and that is my responsibility that you will love this subject. Just follow what I'm telling you. जो मैं लॉजिक्स बता रहा हूँ जस्ट लिखते जाओ. आई एम टेलिंग यू यू विल बी द टैक्स मास्टर, राइट? ओके, नाउ बिफोर मूविंग अहेड, जस्ट अपने जो लेक्चर्स है, लेक्चर्स के पहले ये दीज 3-4 थिंग्स यू शुड कीप रेडी. फर्स्ट, नोटबुक. नाउ नोटबुक में क्या, नोटबुक में सी इट विल बी बेटर इफ यू हैव अ रजिस्टर. यू नो रजिस्टर से बड़ा रजिस्टर रहता है, तो रजिस्टर ट्राई करो, मिलता है तो. अदरवाइज 200 पेजेस और 400 पेजेस नोटबुक वुड बी रिकमेंडेड. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, मैंडेटरी है पोस्टिट्स एंड हाईलाइटर. पोस्टिट तो चाहिए ही चाहिए कुछ भी करके. पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, पेन्स चाहिए, 4 पेन्स, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक, राइट? ओके. पॉइंट नंबर 3, थिंग्स इंक्लूडेड इन दिस कोर्स. सर ये जो पूरा कोर्स होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड, क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हो. आई एम गोइंग टू गिव यू वन समरी बुक. इन दैट समरी बुक, ओके, माई समरी बुक एंड मेन मटीरियल बोथ आर द सेम. जो समरी बुक है एंड मेन मटीरियल है सब सेम है. I'm going to make you write the logics so that you will remember the logics. Because if I give you the logic in the notebook or textbook, you'll just read, or maybe you'll just refer to the summary book and go ahead. But if I tell you the logic and if you write it down, I'm sure that you will not forget that section ever. Okay, so summary book deliver हो जाएगा, question bank भी deliver हो जाएगा. After that, point number 4, after the lectures get over, usually what happens, now I know that this batch is a mixture of November December attempt as well as May and June attempt. So some people are, so it's a mixture of 3 courses, CA, CS and CMA. Some people are for CS, some people are for CMA, some people are for CA, but the portion is the same. Some things are addition are there in addition
to CA, because CA, for example, there are 8 chapters. In CS, there are 10 chapters. CS, there are 10 chapters, and CMA also there are 10 chapters, right? So I will accordingly manage. अभी जब भी, for example, CA का complete हो गया, I will announce कि इसके आगे CA वालों का applicable नहीं है, and I will make sure that this happens at the end, so that the CA people, if they want to leave the meeting, they can leave the meeting. So we can do it this way, right? वो सब कुछ हो जाएगा. Our lectures are going to get over in the best manner. And after the lectures get over, no, one problem everybody faces is, sir, lecture तो complete हो गया, but I'm not able to remember anything. You will not face this in the next month. You will face this if you are giving December attempt, then, or it's okay, December attempt तो इधर ही है. But जो May के बच्चे, May and June के बच्चे, उनके लिए, if you are finishing your tax lectures right now, I'm telling you, you are going to forget everything. But वो जो भूलना जो है ना, वो कम करने का काम मैं करने वाला हूँ. I'm going to upload all the revision videos for you. I'm going to so you must be knowing that on YouTube and on Instagram I have started this reel series. Like in a minute I revise entire topic. So जो reel का series है उसमें every day, even if you listen to one video ना, तो you will be able to remember every section. That is my guarantee. मैं बीच बीच में टेस्ट्स भी रखूंगा, छोटे छोटे टेस्ट, वो उसके हिसाब से we'll be able to cover this portion beautifully. It is my guarantee that you will be able to score good marks in this paper. But just that, जो जितना मैं बता रहा हूं उतना करो, ठीक है एवरीवन? Cool. Okay, now the fifth one is doubts. If doubts are not coming, there is something wrong. Taxation is such a subject that you should get doubts. If you are not getting doubts, कुछ तो गलत जा रहा है, right? अभी doubts कभी आएंगे? Whenever you will solve everything on your own, you will get some doubts. हम लोग को ensure करना है कि मैं जितना कर रहा हूं उतना तो करना ही है. Along with that, you will have to solve some things on your own. I'm going to give you some homework. Don't consider that as homework, because we feel like we are in school. So we are not going to call it homework, but we are going to call that practice sums. Okay, practice sums, and practice sums are important to solve, right? Now I know that CS के लिए the paper is only MCQ. CS के लिए the paper is MCQ, but still you'll have to solve certain things. Some questions are going to be there where you'll have to solve and write the answer. So solving is going to be there, just that you're not required to present. That's it. Okay. Now, what if you get the doubts during the session? If you get the doubts during the session, if it is possible, put it in the chat immediately. If it is not possible to put it in the chat, there is one option of raise hand in Zoom. Just raise your hand. Then I will just complete the topic. जो भी कुछ topic है वो complete करूँगा. Complete करने के बाद I will just stop there and I will take your doubts. एक एक डाउट क्लियर होगा, दैट इज माई गारंटी. डोंट वरी एट ऑल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. आफ्टर द लेक्चर्स आपको अगर कुछ भी डिस्कस करना होगा, आई विल वेट एंड आई विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स. बाद में लेक्चर्स होने के बाद कैसे डाउट सॉल्व करने हैं वो हम लोग बाद में देखते हैं. लेक्चर्स मतलब पूरा सिलेबस होने के बाद. एकदम क्लियर एवरीबडी? ऑल गुड? ओके. वन थिंग, आई वॉन्ट एवरीबडीज कैमरा टू बी ऑन. आई एम वेरी सॉरी, बट we are staying in such a period that we get a lot of distractions from social media. तो social media इतना खतरनाक चीज है ना, वो एक नोटिफिकेशन भी आया ना, पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्शन अपना हो जाता है. सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू कीप द वीडियोज ऑन. धनुष, सबरीवेलू, शंकर, वीडियोज नीड टू बी ऑन, बिकॉज मुझे समझेगा कि तुम लोग को समझा है कि नहीं समझा है. ओके, ग्रेट. अभी डू यू हैव एनी डाउट्स टिल हियर? जितना अभी डिस्कस किया, डू यू हैव एनी डाउट्स? बुक्स मिल जाएंगे, बुक्स डिस्पैच करने के लिए डिस्पैच हो गए हैं. यू विल गेट द बुक्स, यू विल ऑल्सो गेट द मैसेज फॉर ट्रैकिंग दैट दोज बुक्स. सो वो भी तुम लोग को मिल जाएगा, राइट? रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट, जो लोगों के अटेम्प्ट है वो अकॉर्डिंगली यू विल गेट द बुक्स. जो नवंबर दिसंबर के लिए है उनको जल्दी मिल जाएगा, एंड मे के लिए तो 3 to 4 days, बट विल हैव टू मैनेज फॉर दोज डेज. बट आई विल एंश्योर दैट ज़्यादा लिखने का काम नहीं होगा. ओके. So in today's session, we are going to do some introduction of direct tax. कि what is there? वो सब कुछ हम लोग बात करने वाले. Okay. चलो. Taxation. सबसे पहले, if you are having any kind of fear about taxation, पहले वो निकालो.
फियर नहीं होना चाहिए टैक्सेशन का, बिकॉज टैक्सेशन का फियर होगा, बहुत लोगों को होता है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि टैक्सेशन बोलने के बाद लोगों को डर लगता है, तो डर पहले निकालो निकालो टैक्सेशन का। टैक्सेशन इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिस किया सब कुछ पॉसिबल है। कैसे प्रैक्टिस करना है बताऊंगा अभी। विल कम टू द सिलेबस। Syllabus में there are two types of taxes. One is direct tax and second one is indirect tax. Now I have not written anything under direct tax and indirect tax. Why? Because for CA students, direct tax will come for 60 marks, indirect tax will come for 40 marks. For CMA old syllabus, direct tax indirect tax separate paper है. CMA new syllabus mixture है 50-50. And for CS executive students, it is direct tax, indirect tax 50-50. Right? So in this entire course, we are going to have direct tax as well as indirect tax, दोनों सीखने वाले, बराबर है। So first हम लोग स्टार्ट करने वाले direct tax से, उसके बाद we'll come to indirect tax। ठीक है, अभी जो initial sessions होंगे, those initial sessions are going to be for 2.5 hours or maximum 3 hours, but initial session 2.5 hours तक restrict करूंगा, and after that I will pick up the speed and I will finish off the portion in a quicker manner. ठीक है, okay. Now let's begin with the main topic, that is what is tax and why do we need taxes to be imposed. What do you think? I want someone to answer this. What is tax? What do you think? What is tax and why do we need to impose taxes? What do you think? Let's have it a more interactive. जो लगता है वो बोल बिंदास. What can be the meaning of tax? Okay, tax to mujhe samjha that everybody knows. Tax is what? If anybody is earning any income, I'm talking about income tax. If anybody is earning any income, some part of that income you will have to contribute to the government. Okay, this is the meaning of tax. But why do you think, why do we need taxes? अगर taxes नहीं होता life sort होता ना सबका. But why do we need taxes? Simple answer. Yep. Yes, Shankar, what do you think? Why do we need taxes? The taxes are the source of income for the government. Absolutely. That's how they get income. Perfect. That's right. Perfect. This is the source of the government. This is the source of income for the government, for the growth of the country. Absolutely right. Because see, हम लोग जो पैसा देते हैं ना, whatever money we contribute, no, the government utilize, whether government utilizes or not, we don't know, but we give the money for that. So what is the purpose of taxes? The government collects those taxes from us, and government spends those taxes for the betterment of the society, and as Prabhat correctly said, for the growth of the country. Right? अभी ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हो सकते हैं गवर्नमेंट के पास? सबसे पहला एक्सपेंसेस, अच्छे रोड्स चाहिए, अच्छे रोड्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. गवर्नमेंट विल नीड फंड्स. फ्रॉम वेयर विल द गवर्नमेंट गेट द मनी? फ्रॉम अस. पॉइंट नंबर 2, आर्मी, नेवी, ये सबके लिए उनके जो सैलरीज होते हैं वो पे करने के लिए द गवर्नमेंट विल नीड फंड्स. नेक्स्ट वन, डू यू नो दिस? रफाल. डू यू नो गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया है फॉर दिस प्लेन? अप्रोक्सीमेटली 59,000 crores. 59,000 crores गवर्नमेंट हैज स्पेंट ऑन दिस. सो व्हाट डू यू थिंक, किधर से पैसा आया? गवर्नमेंट को ऊपर से तो पैसा नहीं आएगा. गवर्नमेंट गॉट द फंड्स फ्रॉम अस. राइट? 59,000 crores. और ऑफ कोर्स इसके बेनिफिट्स बहुत है. इट्स नॉट लाइक इट्स अ कॉस्ट, इट्स एन इन्वेस्टमेंट आई वुड से, बट स्टिल दे हैव स्पेंट 59,000 crores. राइट? उसके बाद एग्रीकल्चर होता है. यू नो, एग्रीकल्चर के केस में दे गिव सब्सिडीज टू एग्रीकल्चरिस्ट्स. सो वो सब्सिडीज देने के लिए पैसा लगता है. आफ्टर दैट, डू यू नो दिस गाय मुन्ना भाई? मुन्ना भाई, हु इज दिस पर्सन इज अ डॉक्टर. राइट? सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको डॉक्टर्स को पैसा मिलने के लिए government will need funds. After that, do you see any innocent face here? Yeah, so this innocent face is working in a government school, and he teaches in a government school. He would need salary, right? So that's why उनको पैसा देने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसा चाहिए.
So these can be the expenditures which the government has. That's why they will need funds. Now the question is, what can be the sources of revenue? One is income tax. Okay, what do you think, Prabha? Do you pay taxes? Are you a taxpayer of this country? Like, have you paid any tax? Yes, sir. No, sir. Correct. Okay, Dhanush, are you the taxpayer of this country? No, sir. No, I would say everybody is a taxpayer of this country. Why? We are not paying income tax, but we are paying GST, We right? pay GST, yeah. Exactly. We pay Indirectly, we are paying, GST. sir. What is GST? GST is the simplest tax collection. So we go there, we go out, to buy to buy Balaji packet. We pay GST because you'll say MRP है, MRP में GST थोड़ी होता है. अरे everything is inclusive. If you read MRP के नीचे लिखा रहता है all taxes are inclusive in this price. So GST is also there. If you want to buy a fan, you'll go to Vijay Sales, GST लगेगा. If you want to buy Kit Kat, GST, सब जगह GST लगेगा. Basically, we all are the taxpayers of this country. ये जो पैसा मिलता है ना गवर्नमेंट को, इधर जाता है. इधर गया, इधर जाता है, इनके पास. And you'll be shocked to know that armed forces से पे सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का. And India is the third country to spend maximum revenue on the armed forces. और it is required. कश्मीर में कितना खर्चा होता है, कितने करोड़ों में खर्चा होता है for the security of the army. तो ये सब चीजों के लिए पैसा लगता है. And that is why they need cash. ये तो ठीक है, तो बहुत मतलब मैक्रो लेवल पे वी थॉट. हम लोग ने सोचा चल नहीं दूंगा टैक्स, जो करने का कर. आई सेड नहीं दूंगा टैक्स, जो करने का कर. तो गवर्नमेंट बोलती ठीक है, टुमारो इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी, टुमारो अगर मेरे घर में चोरी हुआ, आई गो टू द पुलिस स्टेशन, आई टेल द पुलिस गाय कि मेरे घर पे चोरी हुआ. वो बोला कि टैक्स भरता है क्या? नहीं भरता. हम लोग को सैलरी कैसे मिलेगा? हम कुछ नहीं कर सकते. Are you understanding the consequence? If I don't pay the tax, roads will be very bad. Right now, the roads are bad only, but still. So, exactly. So, एक एक चीज टैक्स का इतना फर्क पड़ता है ना, हम लोग को रियलाइज भी नहीं होता. Okay, what do you think? एक just fun question. कितने परसेंटेज लोग टैक्सेस पे करते होंगे इन इंडिया? ऐसी वाइल्ड गेस. मुझे भी एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम, बट न्यूज आर्टिकल से तो समझ गया मैं. 3%. 3%, 4%, एब्सोल्युटली 2 to 3%. यू जस्ट इमेजिन, हम लोग जो इतना गालियां देते हैं गवर्नमेंट को. आई एम नॉट फेवरिंग एनी गवर्नमेंट. पहले भी देते थे, अभी भी दे रहे लोग. एनी गवर्नमेंट कम गाली तो देने वाले. जस्ट दैट अंडरस्टैंड, आउट ऑफ such a big population, only 2% people pay tax. People who pay the tax are 2%, and people who expect is 100%. Only 2% pay the tax, and people who are expecting are 100%. Are you understanding कैसे चलेगा देश? And सबसे ज्यादा मतलब मैंने एक चीज ऑब्जर्व क्या किया, दैट बाकी के कंट्रीज में, इफ यू गो टू एनी कंट्री, सब जगह रोड्स बहुत चकाचक है. लाइक एवरीथिंग इज अमेजिंग. तो दे आर यूटिलाइजिंग द फंड्स प्रॉपरली. हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश में पैसा है पर पॉपुलेशन इतना है ना, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होता है. अपने कंट्री में यूटिलाइजेशन इज अ बिग प्रॉब्लम. पैसा कलेक्ट अच्छे से हो रहा है. और वन मोर थिंग, अर्लियर इन 1990s, the tax rate was nearly 97%. If you go to other country, they don't even think of tax evasion. They just pay the tax. And I have observed this. In India, we always try to evade the tax. Why? Because we have this habit. Why? Because earlier the tax rate was 97%. So people used to try to find the loopholes to evade the taxes. And that's why ये तो पूरे सालों से आ रहा है ये चीज कि मुझे टैक्स तो क्या करना है, झोल करने का. टैक्स का मतलब क्या ब्रो, बता ना टैक्स कैसे बचाऊं. ये क्वेश्चन तो once you become a chartered accountant or company secretary or CMA, once you have learned tax, you are going to get this question. Bro, जरा बता ना टैक्स कैसे बचाऊं.
ये क्वेश्चंस आने वाले. तो ये सब चीजों में ना पैसा लगता है, और पैसा किधर से आता है? टैक्सेस से आता है. ओके, नाउ एक चीज है, there are two types of taxes as we discussed. One is direct tax and second one is indirect tax. Now what do you think what can be the meaning of direct tax? मतलब क्या होगा direct tax में? कौन से points होंगे? Can I say income tax? Income tax will fall under direct tax. Okay, in indirect tax what do you think what will fall? एक GST है. GST. Customs duty. Sorry? Customs duty, sir. Customs duty, absolutely, customs duty. And there is one more thing called excise. Excise is actually applicable on only few products, but it is still there. Okay, so two taxes we'll see: direct tax में income tax and indirect tax में GST and custom duty. Okay, income tax we understood. If we earn any income, we'll have to pay some part of it to the government. GST में we understood it is not applied on any income. It is applied on what? It is applied on goods and services. Goods and services, right? And the third one is custom duty. Okay, do you know what is the meaning of custom duty? Have you heard about this custom duty part? Custom Tax duty. payable at a time of export or import of goods, sir. Absolutely. It is imposed at the time of import as well as export of goods. If you import any goods, custom duty is applicable. If you export any goods, custom duty will be applicable. Now, if you are taking any good from outside India to India, there are certain rules कि तू इतना ही ये चीज ला सकता है. If you get any particular product more than the limit which is prescribed, they will ask you to pay duty. सबसे बेस्ट एग्जांपल अपना ये है. इधर गया. Who's this? हार्दिक पांड्या. हार्दिक पांड्या को मत देखो, इधर देखो. When he was flying from Dubai to Mumbai, when he was flying from Dubai to India, I don't remember Mumbai, but kidhar to he is flying in India from Dubai. His 1.5 crore watch got seized. Now, in the news, it is coming that he did not mention or he did not declare. But after that, he went on Twitter and he announced this to everyone that he did not evade any taxes. He went to the authorities and told that person, I have not disclosed this particular watch. So basically, you'll have to disclose this and you'll have to pay taxes on that. कितने का घड़ी था? 1.5 crore. In the news, it is 5 crore. But as per his tweet, it is 1.5 crore. Understood? So matlab kya? You are importing any goods from outside India to India without paying any tax, nahi chalega. You'll have to pay tax. If you are getting any alcohol from outside India to India, तुम लोग को ये मालूम होगा बराबर कि हाँ 2 लीटर तक रिस्ट्रिक्शन रहता है. सो एवरीबडी नोज दिस. ये सबको मालूम था पर गाड़ी का मालूम नहीं था. So there is a restriction on alcohol. Why? Because you'll start your business here. So there is a restriction. If you are coming from Dubai to Mumbai or Dubai to India, then in that case there is a restriction on gold because gold is cheaper in Dubai. So all these things are managed by which duty or which authorities? This is managed by custom authorities. So unfortunately for CA students, inter level पे customs नहीं है, but for CMA and CA students custom है. तो हम लोग पढ़ने वाले हो, बराबर है? Okay. Now I'll tell you in detail कि why income tax is considered as direct tax and why GST is considered as indirect tax. बहुत interesting part है. See, थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा. एक एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल ही लेते हैं तो थोड़ा बड़ा लेंगे एग्जांपल, राइट? सो महाजन वर्ड, देयर इज वन पर्सन कॉल्ड अमित महाजन एंड देयर इज वन कंपनी कॉल्ड महाजन वर्चुअल्स. ठीक है ना? महाजन वर्चुअल्स इज पेइंग 10 crores ऑफ सैलरी टू अमित महाजन. इधर तो अच्छा लगे, राइट? तो ये इधर आई एम फीलिंग गुड इन द एग्जांपल. सो आई एम गेटिंग 10 crores ऑफ सैलरी फ्रॉम महाजन वर्चुअल्स. नाउ what do you think who will pay tax? What do you think who will pay tax? Will Dhanush come and pay tax for me? No. Will Gauri come and pay tax for me? No. Will Prabhat? No. Will Purtikam? No. I will have to pay tax. Matlab, the person who is earning the income, it is that person's responsibility to pay the tax directly to the government.
Here, the person who is earning the income, it is that person's responsibility to pay the tax directly to the government. That's why that income tax is known as direct tax. Since the tax is being paid by the person directly to the government, that's why it is direct tax. Now, you must have heard the concept of TDS. If you are thinking about TDS, don't think right now because TDS ka intention is different. I will tell you once the chapter comes. But initially, the responsibility was of the person who is earning the income, that is Amit Mahajan. Since I'm earning the income, since I'm paying the tax directly, which tax is that? Income tax. Since I'm paying the income tax directly to the government, it is known as direct tax. Understood? अभी इतना सैलरी मिलता है इसको 10 करोड़, तो मैं बोला थोड़ा सा खर्चा करते हैं, right? So what did I do? I went to Vijay Sales. I went to the store Vijay Sales and I bought one fridge of 2 lakh rupees. 2 lakh rupees का फ्रिज लिया. What do you think? ये इनवॉइस कैसे बनाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर ये सब टाइम पास लिखा रहेगा, विजय सेल्स, एड्रेस विड्रेस सब. ओके, उसके बाद वैल्यू, राइट? उसके बाद 2 lakhs. ओके, that's it, or they will add anything to this? They will add GST. one more thing, that is what? GST plus GST of assuming the rate is 18%. Assuming the rate is 18%, what is the how much will I get? 36,000. Correct. Now total bill value कितना होगा? 2.36 lakhs. ऐसे करेंगे, इधर कुछ साइन लेंगे, that's it. Now they will give this bill to me. What do you think? How much should I pay? Should I pay 2 lakhs or should I pay 2 lakh 36? अरे पूछ कौन रहा है? I'll have to pay 2 lakh 36. They will not ask me, do you want to pay GST? Oh, you don't want to pay GST? You pay only 2 lakhs. They will not ask me. They will compulsorily charge GST in my bill. And they will give me 2 lakh 36,000. Okay, then now you tell me, who is getting the ultimate burden of tax? I'm paying, na? I'm paying the tax of 36,000. Now, when I will give 2 lakh 36,000 to Vijay Sales, do you think Vijay Sales will keep 2 lakh 36 with Vijay Sales only? How much money will be kept by Vijay Sales? 2 lakhs or 2 lakh 36,000? 2 lakh. 2 lakhs. 2 lakh rupees. Why? Because 36,000 is not of Vijay Sales. Vijay Sales will have to give these funds of 36,000 to the government. Now understand one thing. It was my responsibility to pay 36,000. But did I pay the tax to the government directly? No. But can I say I paid the tax to Vijay Sales first and then Vijay Sales paid that tax to the government? Yes. So can I say I indirectly paid 36,000 to the government? That's why GST is known as indirect tax. Ultimately, tax मुझे ही pay करना है. The person who goes to the government, knocks the door of the government and pays the tax to the government is different. In income tax, I'm earning income, I'm going to the government's door, knocking the door and giving the cash, which means I'm paying the income tax directly, and that's why it is direct tax. In this case, I'm paying the tax to Vijay Sales. Vijay Sales is going on my behalf to government, and government ka door knock karke Vijay Sales is giving, which means government, I am paying the tax to the government of 36,000 indirectly through Vijay Sales. That's why GST is known as indirect tax. Clear? एकदम clear. Perfect है, सही. Okay. Perfect. So we understood what is the meaning of direct tax. We understood what is the meaning of indirect tax. Today's lecture is going to be very introductory lecture. Tax का तुम लोगों को flavor भी नहीं आएगा अभी के lecture में, unfortunately. But जितना जल्दी I'll try my level best to give you flavor of taxation. ठीक है ना? Okay. After that, ये और एक चीज. What do you think we are going to learn, law or act? Now there is something called Income Tax Act. Income Tax Law. Act, sir. Act. Okay. We are going to learn act. Okay, one answer.
First of all, we need to understand the difference between law and act. Then we'll be able to understand कि ये क्या exactly. See, law and act क्या होता है? Law is a wider term. Law is a wider term. Law has income tax act. Law has income tax rules. Law has notifications issued by them. Law has circulars. And law has case laws. Unfortunately, we are not only learning act, we are going to learn act, rules, notification, circulars, and case law, which means we are not going to learn act, we are going to learn law. Okay, perfect. Now the question comes, sir, what do you mean by act? अगर act है तो rules क्यों है? अगर rules है तो notifications क्यों है? ये सब चीजें दिमाग में आएगी. Okay, I just want to ask one thing. Is there anyone who has learned taxation in the past? मतलब कभी कुछ किया है taxation का course या कभी classes या कुछ? Yeah, sir. Like I have a rough idea. Okay, you have a rough idea. Okay, perfect. ठीक है. So you're the only one, right? Perfect. ठीक है. अभी act, rules, notification, circulars, case laws. अभी act क्या होता है? First, सबसे पहले समझते हैं कि act बनता कैसे है. सबसे पहले समझते हैं एक्ट बनता कैसे. एक्चुअली ये फाउंडेशन का है, फाउंडेशन में लॉ में सिखाया होगा, बट ये तभी आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ ड्राफ्ट. मतलब क्या, किसी को ऐसे याद आया होगा कि यार वी शुड मेक सम लॉ ऑन दिस. अभी वो डायरेक्टली एक्ट थोड़ी बनेगा, राइट? सो पहले क्या होगा, ये पहले होगा ड्राफ्ट. इन दिस ड्राफ्ट दे विल राइट एवरीथिंग. जिसको जिसको लगाना है ना लॉ, that person will write everything कि हाँ ये इनकम होगा तो ये टैक्स लगना चाहिए, ये इनकम होगा तो ये टैक्स लगना चाहिए. This is just a draft. This draft will be presented in 2 houses of parliaments. First of all, it will go to Lok Sabha. We will get the approval in Lok Sabha. Once we get the approval, we will go to Rajya Sabha. We will get an approval in Rajya Sabha also. After we get the approval, it will become a bill. वो क्या बन गया? बिल बन गया. बिल. Still it is not an act. Still it is not an act. This bill will further go to the President of India. And the President of India will read and give the approval. No. He will give the assent over the bill. The appropriate word is assent. 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 Once he gives the assent, when he gives the go ahead, then it will become an act. कितना माथा फोड़ी है एक एक्ट बनाने के लिए. पहले जाओ लोकसभा, then राज्यसभा, then it will become a bill, then you will go to President of India, and President of India will say yes, then it will become an act. एकदम परफेक्ट है इधर तक कि कैसे एक्ट बनता है. बराबर. ये बताना इंपॉर्टेंट था फॉर मी, बिकॉज इफ यू डोंट नो, you will not, and if you don't know this, you will not understand why rules are made. See, these are the points which you will never get in question paper. Question paper में कभी नहीं आएगा. But if you want to understand the law, tax laws, then you should understand from scratch. I'm starting from negative. The journey is long because I have to take you till 100. So negative से start किया तो ही वो एक एक step आगे बढ़ेगा. Everyone perfect है ना? Clear है कि नहीं? So ये बनता है act. Okay. ये act बना कभी था? This act was, okay, any idea ये income tax act बना कभी था? 1960. 1961 में एक्ट बना. तो सर 1961 में पीपल अंडरस्टूड कि टैक्स लगना चाहिए. 1961 इतना लेट नहीं. इफ यू सी दिस, किधर गया? इफ यू सी दिस, 1961 के पहले देयर वाज एन एक्ट ऑफ 1922. 1922 के पहले देयर वाज एन एक्ट ऑफ 1918, 1886, 1884, 1830, 1860. भाई 1860 से टैक्स लग रहा है. अंडरस्टैंडिंग. सो पहला एक्ट 1961 नहीं था. पहला एक्ट कौन सा था? 1860. ठीक है. ओके, जनरल नॉलेज था.
ओके, नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये एक्ट तो बनाया, देन ये रूल्स क्यों बनाए? एक्ट था, सब कुछ डाल देते उसमें, तो रूल्स क्यों बनाए? अंडरस्टैंड, रूल्स बनाना इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. रूल्स बनाना is not that complicated. Now, why? What is complicated? This entire process will take approximately 3 to 4 months. If you want to amend an act, it is not easy. If you want to amend an act, you'll have to first go to Lok Sabha, Rajya Sabha, become a bill, President of India. ये सब करने में 3 to 4 months जाते हैं. And if you want to change any particular language in the act, it will become a headache for the government. And that is why all the procedural parts they have kept in the rules. All the procedural parts मतलब कुछ tax rate बोलना है, या within 30 days you'll have to file this, within 30 days you'll have to download this. ये सब चीजें किधर है? ये सब चीजें एक्ट में नहीं है, ये सब चीजें किधर है? ये सब चीजें रूल्स में है. Because if they want to just change the limit of 30 to 45, it will happen overnight. मोदी जी को लगा नेक्स्ट डे को चेंज करना है, भाई ओवरनाइट, रातों रात चेंज. बट मोदी जी को लगा ये एक्ट में चेंज करना है, नहीं कर सकते रातों रात. यू हैव टू गो टू the entire process. And that's why rules will have all the procedural parts. Now when you will read the section, in that section it is written that it will be filed as may be prescribed. This form will be filed as may be prescribed. अरे भाई as किधर prescribed? As may be prescribed मतलब किधर देखूं मैं? I'll have to check the rules. और वो होता क्या है ना, वो रूल्स नीचे, अभी एक्ट कैसे पढ़ना है तुम लोग को पता था, वो सेक्शन में लिखा है, if you want to see the section, if you want to see the form, sorry, if you want to file the form, that this form will be filed according to the rules as may be prescribed. Okay, पर किधर देखो कौन सा रूल? उसका एक फुटनोट दिया रहेगा नीचे, यू हैव टू रीड द फुटनोट. फुटनोट पे देखने के बाद कौन सा रूल है, यू गो टू रूल्स. रूल्स में जाके यू विल रीड द रूल्स एंड यू विल गेट द आंसर. So it is not that easy, and that's why people find this particular subject difficult, because it is complex. अभी मैंने 6 साल किया इसके लिए, I know these things. The person who is reading or listening this the first time, he'll feel क्या है ये सब, तो ऐसा लगता है, ठीक है ना. So ये रूल्स हम सबको समझा कि रूल्स क्यों बनाए, एक्ट समझा, पर रूल्स क्यों बनाए समझा, because it is easy to amend. रातों रात अमेंड हो सकता है. After that, notification. If they want to change some part, if they want to change, or if they want to amend any particular part of the section which is procedural, then in that case they can issue one notification. They can issue one notification pass करके वो लागू कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. Do you know GST में, okay, do you know GST पे, sorry, पेट्रोल पे GST लगता है कि नहीं? What do you think? पेट्रोल पे जीएसटी लगता है क्या? नहीं लगता है. बट इट इज देयर इन द जीएसटी. डू यू नो दिस? इट इज देयर इन द जीएसटी. उन्होंने क्या बोला है मालूम है एक्ट में? इट विल बी नोटिफाइड, इट विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन. अभी तक तो नोटिफिकेशन आया नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? जीएसटी में है, पेट्रोल इज देयर इन द जीएसटी लॉ और जीएसटी एक्ट, बट इट इज नॉट येट नोटिफाइड. बिकॉज कब से एप्लीकेबल होगा? एक नोटिफिकेशन निकाला, जीएसटी लग जाएगा कल से पेट्रोल पे. नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इसके लिए. अंडरस्टैंडिंग, तुमको जब भी चाहिए वो नोटिफिकेशन ला सकता है गवर्नमेंट, पर मेरे हिसाब से अभी नोटिफिकेशन नहीं लाएगा. बिकॉज इफ दे गेट द नोटिफिकेशन, इट विल बी अ ह्यूज लॉस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. वो कैसे है, क्या है, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जीएसटी के टाइम पे. अंडरस्टैंडिंग एवरीवन नोटिफिकेशन का इंपॉर्टेंस. एक्ट हुआ, रूल्स हुआ, नोटिफिकेशन हुआ, एंड द फोर्थ वन इज सर्क्यूलर्स. होता क्या है ना, असेसिंग ऑफिसर, this is, circulars are not binding on us. Circulars are binding on the income tax department to manage their internal affairs. Internal affairs का हो सकता है, or maybe if they want to say that this particular procedure should be followed in this manner, तो ये सब किधर आएगा? Circulars में आएगा. It is upon me whether to apply that or no. I can just ignore that because it is not meant to be for me. It is meant to be for that particular assessing officer or tax departments. Okay, ये तो ठीक है. उसके बाद आता है केस लॉज. अभी यूल से सर क्या क्या है इधर? एक्ट है, रूल्स है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, और केस लॉ क्या है? सी, आई टेल यू, जितना मैंने काम किया है कंपनी में,
कंपनी में काम करने के बाद ना एक चीज समझता है, प्रैक्टिकलिटी. ऐसे चीजें मैंने आई हैव सीन दीज एग्जांपल्स और आई हैव सीन दीज थिंग्स वेयर इन द एक्ट इट इज रिटन समथिंग एंड इन द सुप्रीम कोर्ट लॉ और सुप्रीम कोर्ट केस लॉ इट इज रिटन समथिंग एल्स. ऐसा भी चीज मैंने देखा है. एक्ट में कुछ अलग लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अलग ही जजमेंट दिया है. नाउ इफ माय फैक्ट इन समबडी एल्सेस केसेस, समझ फॉर एग्जांपल प्रभात के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक फैक्ट पे दिया है कि समझ कि मैं ये बनाता हूँ, चॉकलेट बनाता हूँ, और वो चॉकलेट वेफर है या चॉकलेट चॉकलेट है. फॉर एग्जाम्पल किटकैट का एक केस हुआ था नेस्ले का, और नेस्ले के किटकैट के केस में व्हाट वाज द सिचुएशन, नेस्ले वाज ऑफ द ओपिनियन कि वो क्या है, वो है वेफर. वेफर का टैक्स रेट वाज लोअर, बट टैक्स डिपार्टमेंट वाज ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज अ चॉकलेट बिकॉज चॉकलेट पे ज्यादा टैक्स लगता है. कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं? कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इट विल गो टू हायर अथॉरिटी. अगर फेवरेबल नहीं आया आई विल गो टू हायर अथॉरिटी, इट विल गो टू, समझो एग्जांपल लेते, सुप्रीम कोर्ट में गया. सुप्रीम कोर्ट में ऐसा डिसीजन लिया कि किटकैट में 70% वेफर है एंड 30% चॉकलेट है, so you should not categorize that as chocolate, you should categorize as wafer. वेफर का टैक्स रेट क्या है, लोअर है, तो वो लो. तो ये सब चीजें अगर मेरे केस में, नेस्ले के केस में आंसर आया, in my case the same situations are there, facts are the same, everything is the same, I will tell the government, see, it does not make any sense to fight over this, because even if I go in the higher authority, even if you go in the higher authority, Supreme Court will say that it is wafer because it is already, they have already made the judgment over the same case, right? So that's why it will save a lot of efforts from my end also and from government's end also, and that's why case law इधर help करते हैं. अब ये चीज एक्ट में किधर लिखी नहीं है, पर ये चीज फैक्ट बेस्ड है. फैक्ट मालूम होगा तो उसके हिसाब से हम लोग सब करेंगे. ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग देखने वाले हैं ये पूरे अपने सेशंस में. तो अभी तो सिर्फ एक पहला लेक्चर है, कैपिटल गेन आने दो, उसके बाद धड़ाधड़ मजा आएगा एकदम करने के लिए, राइट? ओके, केस लॉस का इंपॉर्टेंस समझा, केस लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है. सो आई कैन जस्ट रिफर टू दिस केस लॉ, केस विल बी माइन बिकॉज सेम सिचुएशन, सेम फैक्ट्स, एवरीथिंग इज द सेम. Understanding everyone? Getting it right? Perfect. So this was all about this. What are we going to learn? Law or act? इसका तो आंसर मुझे मिल गया. उसके बाद central government says that they want to charge taxes or they want to levy taxes. But who has given the power to them to levy taxes? Who has given the power to them to levy taxes? उसका आंसर है बापों का बाप. सेंट्रल गवर्नमेंट इज अपना बाप, उनका बापों का बाप इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन द पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेवी टैक्सेस. वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला कि ये गवर्नमेंट जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्सेस. अभी उधर से केजरीवाल सर उठे, उधर उन्होंने बोला कि मुझे टैक्स लगाने का है, इधर से मोदी जी उठे, उन्होंने बोला टैक्स लगाने का है. सेम थिंग इज गेटिंग टैक्स ट्वाइस. सो मोदी जी से नहीं 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 मैं तो टैक्स छोड़ूंगा ही नहीं, केजरीवाल इज ऑल्सो लाइक नहीं नहीं मैं तो टैक्स छोड़ूंगा नहीं, आई विल ऑल्सो अप्लाई टैक्स. इधर हुआ कॉन्फ्लिक्ट और इधर हो सकता था कॉन्फ्लिक्ट, एंड दैट्स व्हाई दे स्पेसिफिकली मेंशनड दैट these are the matters on which only center can levy the taxes or center can decide कि कौन से taxes लगाना है. These are the matters जो state government decide करेगा, and this is the concurrent list, मतलब दोनों लोग taxes levy कर सकते हैं, right? Okay, now union list is the list in which all the matters are given where central government can decide whether to tax those particular things or no. स्टेट लिस्ट में क्या दिया है, स्टेट में मैटर्स, मतलब स्टेट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट वाला टैक्स नहीं लगा सकता. स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स लिखा है वो, यूनियन लिस्ट में जो लिखा है स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगा सकता. कैन आई से दिस इज द मोस्ट लॉजिकल सॉल्यूशन व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज गिवन? बिकॉज लोग बाद में झगड़े करते, बिकॉज केजरीवाल अलग पॉलिटिकल पार्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग पॉलिटिकल पार्टी, हमेशा झगड़ा होता. इसका सोल्यूशन दोनों ने ये लिस्ट देके दिया है. Everybody clear with the union list, state list and concurrent list? Now the question comes, concurrent list में क्या होता है? Concurrent list में both center as well as state can levy the taxes. So there are certain subjects which are given, matters which are given. Okay,
नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये इनकम टैक्स कौन से लिस्ट में आएगा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट? व्हाट डू यू थिंक? कल उठ के केजरीवाल जी ने बोला कि अमित महाजन तुझे टैक्स पे करने का है, मैं बोल सकता हूं नहीं करूंगा पे, मैं आई कैन से मैं नहीं करूंगा पे. व्हाई? बिकॉज income tax is falling under union list. State government cannot make any law on income tax. If they if they levy taxes, if state government levies taxes, I am directly say I am not going to pay. ऐसे होगा नहीं, but I'm just saying. Right? Who has the right? Central government has the right. But सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से आर्टिकल में बोला? ये आर्टिकल 246 है, उसमें 3 लिस्ट्स दिए हैं. ये 3 लिस्ट है. ये 3 लिस्ट में एक पॉइंट है आर्टिकल 82. आर्टिकल 82 उसमें लिखा है इनकम टैक्स इज देयर इन दिस. इनकम टैक्स कैन बी लेविड ऑन ऑल द इनकम्स एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम. ऑन ऑल द इनकम्स एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चरल इनकम, which means central government cannot decide to tax agricultural income because उनको क्या देना है? exemption देना है. So agricultural income पे एक भी चीज you'll not see in income tax. In income tax you'll see it is applicable to all except for agricultural income. ऐसा देखेंगे सब जगह पे. Understood everybody? Cool? Okay. Now, what is the procedure for passing an act? We have already seen this here. Draft, Rajya Sabha, Lok Sabha, everything we have seen this, right? उसके बाद आता है what is the name of the act. Okay, उसके पहले can somebody tell me if I just write like this, let's see whether you have learned law in the first level, entry level. How do I read this? Section 24 of subsection 2 of class B, subclass B. Okay, perfect. See, section 24, this is what? This is section. This is subsection. This is clause. And this is subclause. This is 5. Okay. It is 5. Now 24 to 5b, then you will say section 24 subclause 2, section 24 subsection 2 clause 5 subclause b. If you have to just tell somebody over the phone, you can't say कि 24 bracket open 2 bracket open 5 bracket open b bracket close, right? you will not do like this, right? Okay, so ऐसा तुम लोग को मालूम होना चाहिए. But there are 3 sections: section number 2, section number 10 and section number 47 under Income Tax Act. इसमें example है, if I just say this, okay, with the current knowledge which we have, how will I read 2, 10 and 47? कैसे read करूंगा मैं? Section 2, subsection 2. Okay, इसमें ये 3 sections में जो ब्रैकेट में है ना, that is not a subsection, that is a clause. Only in these 3 sections, section 2, section 10, section 47. If it is written 2, you have to write section 2 subclause or clause 2, 10 clause 2, 47 clause 2. Now the question is why? ऐसा क्या है? What is the difference between these 3 sections and other sections? Understand this very carefully. If I say it is section 914 or 5, section 194 5, I will read like section 9 subsection 1 clause 5. तो इधर सबसेक्शन क्यों बोला? Why? Because ये जो सेक्शन है ना, उसमें अलग अलग सबसेक्शंस है, 1 2 3 4, and all these subsections are interlinked to each other. All these 4 points are linked to each other, and that is why these 4 points are known as subsections. But if you see these 3 sections, section 2 bracket में 2 जो लिखा है, that is section 2 is what? Section 2 is definition.
सेक्शन 2 के डेफिनेशन में लिखा है 1 2 3 4. All the 4 definitions are independent, they are not connected to each other. If you see section 10 में लिखा है 1 2 3 4. What is section 10? Exemption, list of exemption. इन्होंने अगर इनकम कमाया, this income is exempt from tax. They have given the list. All the 4 things are not connected to each other, and that is why 10(1) जो बोलते हैं, 10(1) is never section 10 subsection 1. It is always section 10 clause 1. And same with 47. 47 I'm not explaining right now because after capital gains I'll explain. Things are not regarded as transfer, or transactions are not regarded as transfer. तो अभी वो नहीं समझेगा. But did you understand the difference? Basics है, बहुत basics है. But once you join the articleship, once you start working, these things that you should know these things. People will expect these things from you. कि इतना तो मालूम होना चाहिए यार. और ये चीजें अभी नहीं समझती. Once we go there, no, then people judge you and they make judgment कि यार इसको इतना ही मालूम नहीं था, कैसे क्लियर. और ऐसा होता है, क्लियर कैसे किया एग्जाम, ऐसा. अरे ये थोड़ी आया था एग्जाम में तो कैपिटल गेन आया वो पूछ, मैं बोलता हूँ. पीजीबीपी आया वो पूछ, बोलता हूँ. बट ये बेसिक्स ही हम लोग को मालूम नहीं. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग द फाउंडेशन स्ट्रांग, राइट. आई नो वन थिंग, आई टेल यू वन simple thing. One person, that person was a chartered accountant. I was sitting with one of the managers and we were taking one interview in the company. I was just sitting, मैं time pass करने के लिए गया था उधर. तो that person, that interviewer asked that interviewee जिसका interview था, इनकम टैक्स के रेट्स मुझे बता किधर है. बस इतना पूछा, इनकम टैक्स के रेट्स किधर है. उसने इनकम टैक्स निकाला and he started searching for the rates. So we understood he doesn't know. We understood. तो उसने ना पहले 3-4 पेजेस देखे. He saw 5, 6, 7, 8 pages. Then ऐसे flip करके देखा, कुछ समझा नहीं. See, you should know where the income tax rates are. Income tax rates are at the end of the Income Tax Act. You should not open the Income Tax Act from front. If you know the income tax rates, you will not open the Income Tax Act from the front. You'll always open from the back. सिर्फ उससे हम लोग को समझ गया कि उसको मालूम नहीं था कि एक्ट पढ़ना कैसे है. एंड दैट पर्सन जज्ड इन अ मिनट. उसने पढ़ने भी नहीं दिया उसको. विद इन 30 seconds he said okay fine, we understood. He just made a judgment that he doesn't know. And after that I asked him, did you know? He said no. और वो समझ गया. बट आई अंडरस्टैंड कितना क्विकली जजमेंट होता है. फर्स्ट फ्यू पेजेस ही जस्ट फ्लिपिंग, खत्म, इधर ही खत्म. मुझे मालूम ही नहीं कैसे किधर है एक्ट में क्या. तो ये सब चीजें ना, आई वांट टू टीच अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू. जितना पॉसिबल है उतना समझाऊंगा. बाकी का मैं फाइनल में समझाऊंगा तुम लोग को. फाइनल में तो फोड़ेंगे टैक्स को, कुछ नहीं. और इंटर में तो आई विल से, इंटर में यू हैव ओनली 30% ऑफ इनकम टैक्स. फाइनल में देयर आर मोर देन 50 चैप्टर्स. 50 चैप्टर्स मतलब कांट इवन इमेजिन. वैसा it takes approximately 200 and 250 hours just to teach taxation. वैसा without solving, मतलब सॉल्व किया तो 250 तक पहुंचता है. ऐसा मजा आता है. बट वो लेवल जो है ना इनकम टैक्स का, फाइनल में समझता है. बट फाउंडेशन क्लियर होगा, फाउंडेशन मतलब बेस, तो फाइनल में मजा आएगा करने के लिए. और करेंगे, फोड़ेंगे वो दोनों, वो भी. ओके, सो दीज सेक्शंस, सब सेक्शंस, क्लॉजेस, वो सब कुछ तुम लोग को समझ गए. अभी what is the name of the act? Very simple point. What is the name of the act? Understand, this is how you will write the act. This is how you will write the act. ये मुझे क्यों कैसे समझा कि ऐसे लिखना है. इनकम के बाद में डैश, टैक्स स्मॉल, एक्ट ए कैपिटल, कॉमा 1961. If you see any income tax notice, they will write like this. If that is pure, if that person also knows, this is how you will write income tax act. Okay, एक चीज. Now, what do you think? This is applicable to the whole of India, including क्या होगा ये including क्या होगा? Including Jammu and Kashmir. Some acts earlier were not applicable to Jammu and Kashmir, but some acts were applicable to Jammu and Kashmir. तो ये जो एक्ट है ना, सी अभी तो सब कुछ एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर को, बट ये जो एक्ट है ना पहले से एप्लीकेबल था, इंक्लूडिंग. अभी उसका स्टोरी मैं तुम लोग को कभी बाद में बताऊंगा कि क्या हुआ था, कैसे मोदी जी ने गेम खेला, कैसे उनका अलायंस हुआ, बाद में कैसे, वो सब कुछ मैं तुम लोग को बताऊंगा. टेंशन मत लो, राइट. ओके, सो इंक्लूडिंग व्हाट? इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर.
Now ये तो हुआ. Okay, now we'll just start with few sections. Section 1 exactly क्या बोलता है? Section 1 is short title, extent and commencement. शॉर्ट टाइटल मतलब क्या? शॉर्ट में उसको क्या बोलता है? उसका टाइटल बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट. एक्सटेंट, इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. कमेंसमेंट कब से हुआ? कमेंसमेंट हुआ 1/4/1960. क्या बोला था मैंने? It is applicable from 1962. Even though the name is 1961, applicable from 1/4/1962. Perfect. Okay. Section 1 is that. Section 2 is a definition section. Almost in all the acts, if you see, section 2 is usually a definition section. Abhi the question is, ये definition section क्यों होता है? Definition section क्यों होता है? Can somebody tell me कि definition? Now this class is becoming a mixture of law and tax, I know, but important है सब चीजें समझना. Definition का section अलग क्यों है? What do you think? See, definition section is important. Why? Because in every section there will be some a point where government will have to put some definition. For example, capital asset. What is the definition of capital asset? They will explain. Now this capital asset thing can come in so many sections. So in every section you are going to define what is capital asset? No. In every section this point will come. Previous year, assessment year. तो क्या सब सेक्शन में एक्सप्लेन करते बैठेंगे क्या? नहीं. सो बेसिकली फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस दे हैव सेड सेक्शन नंबर 2 इज डेफिनेशन. आगे जाके कुछ भी प्रॉब्लम हुआ ना, सेक्शन नंबर 2 में आके देख ले. कुछ भी पढ़ना है ना, सेक्शन नंबर 2 में आके देख ले. दिस इज योर सेक्शन नंबर 2. डिड यू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ दिस? राइट. सेक्शन 3 इज अ प्रीवियस ईयर. सब अभी अपना थोड़ा सा चालू होता है अपना टैक्सेशन. सी, प्रीवियस ईयर क्या होता है? Okay, what is financial year? Financial year will start from which date? 1/4/21/22 बोलना है तो 21, 31, 3, 22. Perfect है. Now, just try to answer this. If you are earning income in this financial year, what do you think? When will you pay tax on the income which you have earned? Will you Next pay year, sir. tax on the 31st of March? ऐसे तुम लोग बोलोगे यार फाइनेंशियल ईयर एंड जब भी होता है 31st of March तभी इनकम टैक्स पे करना चाहिए. बट यू अंडरस्टैंड द इनकन्वीनियंस. अरे अगर 31st of March को रात को 11 बजे मैंने कौन सा ट्रांजैक्शन किया तो क्या 10 मिनट में इनकम टैक्स भरूं? बराबर ना? 31st March को रात को 11:59 मिनट को इफ आई रिसीव एनी अमाउंट, I will have to pay tax in financial year 21-22 only. So if I have to pay tax in financial year 21-22, please give me some time, brother. Please give me some time. तो वो जो टाइम मांग रहा हूँ ना, तो मुझे उन्होंने टाइम दिया. मुझे टाइम दिया कब तक? इंडिविजुअल रहूंगा 31st of July तक. So before 31st of July 2022, I will have to make a payment of income earned during this period. Can I say the income which is earned in this year, can I say I'm making the assessment or making the payment of tax in the next financial year? Can I say I'm assessing my income in this financial year? Or assessing officer will assess my income in this financial year? Yes. And that is why the year from 1/4/2022 till 31/3/2023 is known as assessment year. And the year prior to it is known as previous year. And a year prior to it is known as previous year. And that is why this is previous year. It is so ironic. Ironic nahi bol sakte. It is so weird. Ironic to it's a good word. It is so weird that current financial year is a previous year in income tax. ये क्या है? Current financial year is a previous year in income tax, which means when I say previous year, in general terms, previous year मतलब पिछला साल.
But in income tax, previous year is current financial year. And that's why it is important for you to first know what is assessment year, or assessment year ka pichla saal is previous year. I always suggest this to my students that whenever you say previous year, no, because we are not used to say previous year, we are used to say financial year. So kabhi bhi question mein previous year dikhana, convert it into current financial year or financial year. It becomes easy for us because in accounts everywhere we see financial year, right? Okay. Everybody got it? What is previous year and what is assessment year? Pakka? Excellent. Okay. Now I want you to write this down. क्या लिखना है मालूम है? पहले ये लिखो. Section number 1. Short title, extent and commencement. पहला ये लिखो. I'll just tell you what to write in this. Okay. Now short title के नीचे लिखो Income Tax Act 1961. This one. Then the next one is extent, like it is applicable to the whole of India, including J&K. Commencement is 1/4/1962. Okay, done. Section 2 is talking about definitions. Just write section 2 definition. Section 3, meaning of previous year. So basically section 2 and section 3 both are definitions, but section 2 has multiple definitions. Section 3 has only one definition of previous year. Okay, now just write this. I'll just tell you what to write. Just give me 1 minute. I'll just improvise this. Yeah, you can write this.
हुआ क्या? प्रभात लिखा ना? Yes, sir. परफेक्ट. कूल. एवरीवन डन? हुआ क्या? सही है. ओके. This is your section number 3. एक section एक आराम से will go step by step. Section 1 was short title extend commencement. Section 2 is definition. Section 3 previous year. Now one question I get very often from almost all the students that sir, do we have to remember the section numbers in direct tax? Now for CS it is okay if you don't remember the section numbers right now because it is MCQs. But for other students, CA and CMA, I will say yes, you will have to remember the section numbers. You'll say why? Inter level पे क्या section numbers important है? I would say बाकी लोग section numbers याद नहीं रखते ना, इसके लिए हम लोग को रखना है. Because our competition is not with the entire India. It is within in the same class basically. If one person has written the section number, the other person is not written the section number, then definitely वो थोड़ा comparison होने वाला है. Right. तो वो एक सिचुएशन है. इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट द सेक्शन नंबर. और सेक्शन नंबर्स के लिए आई विल एंश्योर दैट यू विल नॉट स्पेंड सेपरेट टाइम फॉर सेक्शन नंबर्स. मैं लूंगा फटाफट तुम लोग से बुलवा के. राइट. सो अभी 2-3 दिन होने के बाद ना, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वंस माय लेक्चर इज ओवर, एंश्योर दैट एटलीस्ट यू आर रीडिंग दैट मच. इन द नेक्स्ट लेक्चर उतना लास्ट टाइम जितना पढ़ा उतना तो आना ही चाहिए. ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस की वजह से होगा क्या, यू विल रीड, अदरवाइज यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. और वो फॉरगेट मतलब ऐसा कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, बा 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 खत्म. उसके बाद कुछ नहीं याद रहेगा. सो दैट्स व्हाई ये सब चीजें है ना, ये हैमरिंग की चीज है, वो मुझे सिर्फ करने दो. ऐसा मत करो कि फर्स्ट 15 मिनट्स सर तो सिर्फ ये लेते हैं तो 15 मिनट्स के बाद ही ज्वाइन करेंगे. डोंट डू दिस. मैं करता था ऐसे क्लास में. आई टेल यू फ्रैंकली, मैं ऐसे करता था. माय प्रोफेसर यूज्ड टू टेक फर्स्ट 15 मिनट्स रिवीजन लेते थे सिर्फ. तो वी यूज्ड टू गो हाफ एन आवर आफ्टर, हाफ एन आवर लेट जाते थे सो दैट वी कुड मिस द रिवीजन बिकॉज हम लोग पढ़ के नहीं जाते थे. बट उसका इम्पैक्ट मुझे बाद में समझा कि क्या होता है. और जिन्होंने सीरियसली किया ना, उनको सच में बहुत अच्छे से फायदा हुआ. ठीक है, वॉट एवर, बट जो भी कुछ है, पर तुम लोग ऐसे मत करना. ठीक है ना. सेक्शन नंबर 4 इज saying that income earned in the previous year will be taxed or assessed in the assessment year. Office. Income earned in the previous year will be taxed or assessed in the assessment year. This we already know because वही हम लोग ने अभी किया. We did exactly the same thing right now. I just told you this. I will earn income in this year. It will be taxed or assessed in the assessment year. That's why section number 4 के लिए I am not spending additional time. Right? Okay. Now, your entire tax laws will have this equation. First, you will have to compute the total income. Our main challenge is going to be this. Into tax rate, you will get the tax amount. What is so different and what is so new in this? ऐसा ही होने वाला है. Tax amount into tax rate equal to tax amount. Oh, sorry, taxable income into tax rate equal to tax amount. Abhi, what do you think? What will we start first? Total income should we compute first or tax rate should we compute first? Taxable income, correct hai. But in every author's book, even in my book, the first chapter is tax rate. The first chapter is tax rate. Tax compute कैसे करें? Income बाद में देखेंगे रे, पहले tax compute करना सीख. So it is like that. First you try to compute the tax and then we'll see income कैसे compute करना है. ठीक है, तो first we are going to learn how to compute the tax. Today only we are going to learn that. Right? मजा आएगा. Easy एकदम. Okay. Total income एक सेक्शन 245 है, उसमें लिखा है कि क्या है. Income referred to in section 5. What is the meaning of total income? Section referred to in section 5. Income referred to in section 5 and computed in the manner laid down in this act.
that is section number 14. Section 5 में लिखा है what is the scope of income, which income will be taxable in India, which types of income will be taxable in India, and for computing that income you will refer to section number 14. Section number 14 में लिखा है there are 5 heads of incomes. The first head of income is income from salaries. Second head of income is income from house property. Third income is profits and gains from business and profession. Fourth income is capital gains. Fifth income is income from other sources. I will have to refer to these 5 heads of incomes. Where is this written? This is written in section number 14. Why am I looking at section number 14? Because section number 5 में क्या लिखा है? This is the scope of total income. When you will read section 14, ये scope of total income इसके हिसाब से निकालो. This is how you will connect 5 and 14. See, मैं बहुत डेप्थ में जा रहा हूँ in the first lecture only because taxation ऐसे ही सीखना चाहिए. This is how you should learn tax along with the linking of sections. See, I can just start with the basic concepts of tax and I can finish that in one lecture. If you see my introduction lecture मतलब जो revision lectures है, that will be sufficient. But ये चीजें जो है ना, in depth knowledge, ये चीजें से full course में मिलेंगी तुझे. ठीक है? Okay. Now section 5 भी हो गया. Section 1 क्या था? Section 1 short title extent commencement. Section 2 was definition. Section 3 previous year and previous year क्या होता है? Section 4 में we saw this कि income earned in the previous year will be taxed in the next financial year. Okay. After that total income into tax rate equal to tax amount. Perfect. After that total income कैसे आएगा? किधर लिखा है? 245 में लिखा है. उधर दो चीज लिखा है. Section 5 को रेफर किया. Next Section 14 को रेफर किया. Section 5 में लिखा है scope of total income. Section 14 में लिखा है use these 5 heads of incomes to identify the total income. This is your total income. Apply the tax rate, you will get the tax amount. Getting it? Okay. अभी I'll tell you one short story. छोटा सा story बोलता हूँ. इधर जो है ना, ये इसका नाम है प्रभात. Okay, he is working in a company called Infosys. Now he is getting a salary of 10 crore. 100 crores of salary मिलता है प्रभात को. सोचना तो बड़ा सोचते हैं इसके लिए. 100 crores का क्या मिलता है? सैलरी मिलता है. Now he works in Infosys. आराम से सुनना पूरा स्टोरी. He works in Infosys from 9 to 5. After 5 o'clock he does not know what to do. So he thinks एक काम करता हूँ. I will go to one chowpatty and I will start selling what? I will start selling कुल्फी. एक कुल्फी बेचना चालू करता है वो. After 5 he goes to one chowpatty and he starts selling kulfis. Now इसको तो इधर से सैलरी मिल रहा है. He is not satisfied. Where did he go? He starts selling kulfis. And कुल्फी बेच के ना इतना धंधा होता है उसका. और ना ऐसे वो ऑफर रखता है. कोई कपल को देखा तो वो कपल के लिए ऑफर रखेगा. कोई ऐसे छोटे बच्चों को देखा तो छोटे बच्चे के लिए ऑफर रखेगा. So he'll keep some offers and he is doing amazing in his business. So he earns approximately 3 lakh rupees a month from this particular business. So into 12 कर ले. कितना पैसा कमाता है कुल्फी बेच के? 36 lakhs. कुल्फी बेच के पैसा कमाता है. Right? तो he is like यार देख, Infosys में Monday to Friday I will work. After that I will go to sell kulfis. I will earn some good amount of money in kulfis. Okay. By selling kulfis. Now I want to just go somewhere on Saturdays and Sundays and chill.
सिर्फ पैर ऊपर रखने बैठने का है मेरे को पूरा सैटरडे संडे। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में हाथ में क्या, एक ड्रिंक, ड्रिंक मतलब नींबू सोडा, नींबू सोडा, नींबू सोडा, नींबू सोडा पीने का है पूरा, उसकी ऐसी ख्वाहिश है उसकी। सो व्हाट डिड ही डू, ही हैज वन प्रॉपर्टी, he has one property in, say for example, Shimla. So every Saturday Sunday this man goes to Shimla and chill. Sunday night he leaves from Shimla and goes to his place. Now understand, उसका काम इतना बढ़ गया, इन्फोसिस का नहीं, कुल्फी का काम इतना बढ़ गया कि लोगों ने बोला प्लीज सर सैटरडे संडे भी आना, सैटरडे संडे भी आना। इतना उनको डिमांड आया प्रभात को कि सैटरडे संडे भी कुल्फी बेचने के लिए आओ, तो ही गोज टू सेल कुल्फीज ऑन सैटरडे संडे। बट द मेन प्रॉब्लम इज द प्रॉपर्टी इज वेकेंट नाउ, nobody goes to this property. Now he decides one thing, he will give this property on rent. He will give this property on rent to Shankar. And Shankar pays how much? Shankar pays rupees 10 lakhs for this Shimla property. एकदम क्लियर इधर तक स्टोरी। ही वर्क्स इन इन्फोसिस, ही अर्न सैलरी, आफ्टर दैट ही सेल्स कुल्फी। ही हैज वन मोर हाउस प्रॉपर्टी विच ही गिव्स ऑन रेंट, ही अर्न्स 10 लाख रुपीज अ ईयर। बराबर, अभी इतना पैसा है उसके पास, इतना पैसा है, तो उसने ना मस्त एक फिक्स डिपॉजिट बना के रखा है। फिक्स डिपॉजिट बना के रखा है, उससे उसको इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट 1 लाख रुपया पर ईयर, 1 लाख रुपीज पर ईयर उसको इंटरेस्ट आता है। अभी आफ्टर दैट ये शंकर ना बहुत मस्ती करता है अपने प्रॉपर्टी में, बहुत मस्ती करता है, तो उसने शंकर को निकाल दिया। एंड ही इज लाइक कि प्रॉपर्टी का कुछ नहीं हो सकता, आई विल डू वन थिंग, आई विल सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, आई विल सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, उसने क्या किया, प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर दिया। चल एक दूसरा एग्जाम्पल लेते, उसके बाद और एक प्रॉपर्टी था, और वो शंकर बेचारा अच्छा है रे, प्रॉपर्टी है इधर, और ये प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी जो है सेल ऑफ कर दिया। अभी वो सेल ऑफ करने के बाद दिस मैन गॉट 3 crore rupees. Understand the sources of income of Prabhat. First source of income is 100 crore. Second source of income is 36 lakhs. Third source of income is 10 lakhs. Fourth source of income is this 3 crore. And fifth source of income is interest. Understand, all these are incomes. Can I say Prabhat will have to pay income tax on all these incomes? कौन से इनकम्स है? 3 करोड़, 100 करोड़, 1 लाख, 10 लाख, 36 लाख, ये सब पे प्रभात को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल ही कंप्यूट द इनकम? ही विल कंप्यूट द इनकम फर्स्ट ऑफ ऑल, सेक्शन नंबर 5 देखा, सेक्शन नंबर 5 में मुझे समझा कि मुझे टोटल इनकम क्या होता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होता है। आफ्टर दैट आई सॉ सेक्शन नंबर 14, इन सेक्शन नंबर 14 आई अंडरस्टूड दैट आई हैव टू बाइफरकेट माय इनकम इनटू 5 हेड्स ऑफ इनकम्स। सो 5 हेड्स ऑफ इनकम्स में फर्स्ट क्या था, मेरा था सैलरी, मेरा सैलरी था 100 करोड़, आई विल राइट इधर हियर 100 करोड़। व्हाट इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, नॉट सेलिंग, रेंटिंग ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, रेंट करने के बाद आई गॉट 10 लाख रुपीज, सो आई विल राइट 10 लाख रुपीज। आफ्टर दैट डू आई हैव एनी बिजनेस? यस, ही सेल्स व्हाट, ही सेल्स कुल्फीज, कुल्फीज बेच के उसको कितना 36 lakhs मिलता है, सो ही विल बाइफरकेट 36 lakhs here. After that, capital gains, once he sell this property to, he earned capital gains, he will have to pay tax under capital gains. कितना इधर आएगा? 3 करोड़। And income from other source, उसको क्या है, interest income मिलता है from the fixed deposit. So इधर कितना आएगा, कितना है, 1 लाख। So if I add all the incomes, 100 crore, 10 lakhs, 36 lakhs, 3 crore, 1 lakh, then in that case, please try to understand, he will have one income, and that income is known as gross total income. Gross total income. Is everybody clear with this part? Which income to be bifurcated in under which head? Salary का salary में जाएगा. If you give the house property on rent, then only house property. Understand, selling of house property is not income from house property. Renting of house property is income from house property. Point 2.
Point 3, if you have a business or profession, 36 lakhs will go to PGBP. उसको प्यार से क्या बोलते हैं? PGBP. Fourth one is capital gain. What is this capital gain? If you sell anything, you will earn capital gain. Now here in this example, it was property, but it can be my shares, it can be my jewelry, it can be anything. तो वो capital gain में देखेंगे क्या, right? And if you earn anything other than salary, house, property, business and business profession and capital gain, it will fall under income from other sources. Lottery winning किधर जाएगा? Income from other sources. लॉटरी विन किधर जाएगा? हॉर्स रेस से पैसा कमाया, किधर जाएगा? डिविडेंड मिला, सैलरी है क्या? नहीं. हाउस प्रॉपर्टी है क्या? नहीं. मेरा बिजनेस है क्या डिविडेंड मिलना? नहीं. कैपिटल गेन कुछ सेल किया क्या? नहीं. तो किधर जाएगा? इट विल फॉर्म अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. जो किसी का भी नहीं ना, वो आईएफओएस का. इफ यू आर नॉट फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द स्पेसिफिक हेड्स, यू विल फॉल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. एक भी इनकम अनटैक्स नहीं रहेगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है. And that's why income from other sources came into the picture. एकदम proper, पक्का. Okay, great. I think with this introduction, we can start the main chapter, that is basic concepts of tax. But before that, we can take a short break of 5 minutes. 5 minute का break लेते हैं. After that, we'll have this session for approximately 20-25 minutes more, and then we'll stop for today. Okay, we'll take a break of 5 minutes and then we will meet. Cool. Okay, chal. So here today we are going to understand how to compute the tax of an individual. Okay, individual का tax कैसे compute करते हैं? See, section 4 is the charging section and rates of tax. अभी देखते हैं exactly क्या है. एक चीज मेरा actually आपको बताना भूल गया मैं. एक होता है इनकम टैक्स एक्ट, (1961). If you want to amend this Income Tax Act 1961, you can't just amend the act. Okay, आया आज सोचा आज amend करते तो amend कर दिया. It is not like that. If you want to amend Income Tax Act, you cannot amend Income Tax Act. You will have to take an amendment through Finance Act. You have to get an amendment through Finance Act. और ये Finance Act का amendment कभी आता है? This amendment comes in the finance budget. The budget comes in the month of February. वो budget में Finance Act आता है, और वो Finance Act usually कब से applicable होता है? Coming April से applicable होना चालू होता है. So if you want to amend Income Tax Act, you cannot just amend Income Tax Act. You will have to take the amendment through Finance Act. Understanding? ये एक पॉइंट मेरा बताना भूल गया था मैं. ठीक है. See, I have written here, tax rates are fixed by the annual Finance Act and not by Income Tax Act. ठीक है. After that, total income, it means total income from all the sources after all permissible deductions except incomes taxable at specified rate. ये सब कुछ हम लोग नीचे देखने वाले हैं. अभी if you have to compute the tax of an individual, बहुत आराम से जा रहा हूं मैं. You are identifying the tax for individual, HUF, AOP, BOI, artificial juridical person. Now, let's understand what is the meaning of individual. Individual मतलब you, me, we are individuals, right? So, individual का कुछ अलग explanation नहीं है. We are individuals. उसके हाथ में कैसे tax होगा? We'll understand this. Second is, have you heard about HUF, Hindu Undivided Family? Now the very common question comes, sir, will Hindu undivided family applicable to Muslims? Answer is no. मुझे बहुत लोगों के messages आते हैं specifically इसके लिए. HUF is applicable to Muslims? No, it is not applicable to Muslims. Only and only Hindu. Okay, perfect. Point number 2. Third is association of persons and body of individuals. Understand this very carefully. Association of persons मतलब क्या? When 2 or more persons come together for a common profit objective, that is known as association of persons. Matlab, there is one company here, there is one firm here, they both are coming together and making ABC. प्यार से we call this joint venture. We call this as joint venture, but in income tax we call this as what?
association of persons. Now one company is coming in this, one firm is coming in this, and there is one individual also who is joining this ABC. This entire ABC is known as association of person, and they will carry out the activities in the name of ABC. Point number one. Point number two is body of individuals. What is the meaning of body of individuals? Here we saw that one company is coming, one firm is coming, one individual is coming. This is making association of persons. Now please understand, when all the individuals come together, when all the individuals come together for a profit motive, this is known as body of individuals. दोनों का meaning is the same, but the persons who are coming together are different. Body of individuals में only individuals are coming, and association of person में other persons are coming. Now persons मतलब क्या? They have defined the word person under Income Tax Act. Person में उन्होंने बोला first, ये एक चीज important है, first is individual, second is HUF, third one is association of person, fourth one is body of individual, fifth one is artificial juridical person. Okay. Any idea about artificial juridical person, Purti? Any idea about this? और नहीं मालूम, कुछ तो था. आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में टेम्पल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती है, म्यूनिसिपैलिटीज होती है, तो वो सब किधर जाते हैं? आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन में जाते हैं. दिस इज पॉइंट नंबर 5. परफेक्ट है. इधर तो कंपनी आया नहीं, राइट? क्या नहीं आया? और कंपनी बाकी है, फर्म बाकी है. इज देयर एनीथिंग व्हिच इज लेफ्ट? LLP. LLP. Yes. Now I was expecting this answer, and LLP is not there in this definition. If you see the definition of persons, it is not there. Why? Because if you understand, or if you read the definition of the firm, in the definition of firm they have mentioned LLP is also included, which means wherever firm is mentioned, LLP, that law is applicable to LLP also. That's why I asked you कि और क्या बाकी है. Understood? So company, firm, तो ये चीजें person के definition में आती है. So initially we are discussing what? Initially we are discussing individual का tax rate, HUF, AOP, BOI, AJP. ठीक है. Now up to 2,50,000, up to 2,50,000, you are not required to pay any income tax. 2,50,000 to 5 lakhs, you are required to pay 5% of income tax. 5 lakhs to 10 lakhs, you are required to pay 20% of income tax, and above 10 lakhs, you are required to pay 30% of income tax. Ekdam simple. Perfect. Now, if I have to just ask you that compute the income tax where my income is 7 lakhs, can you try computing? It is okay if you go wrong. Just try computing where my total income is 7 lakh rupees. And just tell me in the chat what is your answer. That's it. And it is okay to make mistakes because मैंने तो कुछ सिखाया भी नहीं है. And I want you to make mistakes right now. So could you repeat my answer? Yeah, my question is, can you please compute the tax where my income is 7 lakhs? Just tell me in the chat. Okay, see, I'll now teach you how to compute the income tax on this. Just write question number 1. Compute income tax
in the hands of Mr. Bablu, where his income is rupees 7 lakhs. Prabhat, you're right. Okay, and just नीचे लिखना age, $59. That's right. Solution. Solution क्या होगा? 0 to कैसे लिखना है देखो. Now one common mistake is 7 lakhs. I'm falling under which bracket? I'm falling under this bracket, which means सीधा उठा ले 20% और apply कर दे 20%. Right? Understand it is not like that. Understand this is not like that. There is a process. So it is like 0 to 2.5 lakhs. It is nil. Avoid writing 0 in taxation paper. Always write nil in tax paper. ठीक है? 2.5 lakhs to 5 lakhs. ये कितना हुआ? 2.5 to 5. Can I say 2.5 lakhs? कितना इनकम है from 2.5 to 5? 2.5 lakhs into 5%. It comes to 12,500. Now 5 lakhs to कितना? 7 lakhs, no? My cap is what? 5 to 10, but I'm falling even in that cap. So 5 to 7 lakhs. इसके अंदर कितना है? 2 lakhs into 20%. That is 2 lakh का 20% comes to 40,000. I will add nil plus 12,500 plus 40,000. I will get the answer of 52,500. Understanding? 52,500. Now this is my tax, but this is not the complete tax. Why? Because either I will write total tax. Okay, tax लिखूंगा. इसके बाद there is one more thing which gets added, that is plus करो health and education cess. Health and education cess at the rate of 4%. Now this 4% will be computed on 52,500. I will get the answer of how much? 52,500 pay, sorry, 52,500 pay 4%. 2,100. I will add this, and total tax liability is 54,600. Now understand one thing very carefully, that health and education cess is applicable to all. There is no भेदभाव कि इसको health and education cess लगाने का है और इसको health and education cess नहीं लगाने का है. You pay health and education cess on every tax liability. Please understand, health and education cess is an additional tax which is charged by the government for one purpose. See, this is tax on tax, absolutely, because you are computing tax. This tax is going to the government. Cess is also going to the government. Sir, फायदा क्या है? इस पे ऐड कर देते. एक क्वेश्चन आया कि नहीं मन में? दो टैक्स क्यों लगाए? What is the purpose of this? I will tell you the reason for this. See, this tax amount will go to the government, and government can do whatever they want to do. Government can do with this tax liability of 52,500.
उनको जो करने का कर सकता है, बट जो 2100 है वो भी गवर्नमेंट के पास ही जाएगा, बट दे कैनॉट डू एनीथिंग विद दिस 2100. व्हाई? बिकॉज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज कलेक्टेड only and only for one specific purpose. You can make out from the name what can be the specific purpose. Health and education के लिए जो कलेक्ट किया जाता है टैक्स, दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. You must have heard about Krishi Kalyan Cess. What was it? You must have heard about Swachh Bharat Cess. What was it? So जो cess collect होता है ना, all the cesses are for a specific purpose. This tax is not collected for a specific purpose. उसको अगर आर्मी पे यूज करना है आर्मी पे यूज करेंगे, उस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे, बट ये जो है ना ये किधर भी यूज नहीं हो सकता. ये सिर्फ हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए ही जाएगा. There is one more cess in GST, that is GST compensation cess. वो जब भी GST करेंगे ना तभी तुम लोग को बताऊंगा कि क्या है, बट ये सेस स्पेसिफिक पर्पस के लिए. सबको समझा सेस का लॉजिक? एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट, एक नंबर. ओके, नाउ इफ आई जस्ट टेल यू टू कंप्यूट, ओके एक बार जस्ट हैव अ लुक एट इट, just have a look at the income and rate. I'll give you one more example. Clear है? Up to 2.5 nothing, 2.5 to 5 5 to 10 20, 10 and above is, about 10 is 30. Okay, अच्छे से पढ़ा ना everybody? एकदम अच्छे से पक्का? Okay, now the income is 10 lakhs. I have one question. If I have an income of 5 lakhs or 10 lakhs, under which bracket will I fall? Which section, which percentage will be applicable for me? If I just say 5 lakhs is my income, which percentage will be applicable? 5% or 20%? 5 lakhs पे? ये तो कभी सोचा ही नहीं. We usually what do we say? We usually say 2.5 to 5, 5 to 10. अरे 5 to 10 तो डबल आ रहा है 5, right? Sir, it's 5 lakh 1 to 10. Yes, it is 5 lakh 1 to 10. It is 2.5 lakh जो है 2,50,000 1 to 5, 5 lakh 1 to 10, 10 lakh 1 to above, मतलब 10 lakh above 10 lakhs. इतना डिटेल में करना है टैक्स, इतना डिटेल में. एंड इंस्टीट्यूट विल फोकस ऑन दिस ओनली. ऐसे फालतू चीजें जो हम लोग को मालूम होनी चाहिए. ठीक है, एकदम बेसिक क्लियर. ओके चलो एक बार करते हैं 10 lakhs. ओके, इधर आई विल राइट टोटल इनकम 10 lakhs, एज 55 years, और कुछ था ये, दैट्स इट.
See, 0 to 2.5, it is 0, nil. 2.5 to 5, what is the difference? Again, 2.5 into 5%. It will be 12,500. Barabar. Then again, 5 lakhs to 10 lakhs. The difference is 5 lakhs into 20%. सिर्फ इधर तक नहीं रुकेंगे, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%. एवरीबॉडी समझा कि नहीं समझा दोस्त? Sabri value, did you understand? Yes, sir. Yeah. Okay. Great. ये हमारा हुआ total income where the total income is 10 lakhs. Age is 55 years. This is how I'll compute the taxable, total tax. Tax liability. Understand, if I have to compute the income which is more than 5 lakh rupees, my income is less than 60, then in that case, the first bracket is always going to be 12,500. This is always going to be 12,500. Please remember. And if my income is 12 lakh rupees, for example, can I just assume first is going to be 0, second is going to be 12,500, third is going to be 1 lakh. So till 10 lakh rupees, you should not do the computation again and again and again, because you know it up to 10 lakhs, it is what? Tax liability 1 lakh 12,500. Everybody understanding? Correct? Correct. Perfect. Is there anybody who did not understand this? If yes, please tell me. Okay. So if my total income is 12 lakh rupees, then I should just say कि हाँ बाबा, I know till 1 lakh 12,500. इसका आगे का बोला, आगे का 20 lakhs, sorry 2 lakhs. 2 lakhs पे 30%. बराबर ना? 2 lakhs पे 30%, which comes to 60,000. I will just add 60,000. This was a shortcut. This was a shortcut. Everybody perfect है ना? Okay. और ये ऐड करके जो भी कुछ आंसर आएगा इस पे मैं क्या करूंगा? 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करूंगा. Perfect. Okay. So now there is one homework. Question 3. Total income 17 lakhs. Age 51. Question 4. Total income is 29.5 lakhs and age 28. Done? Okay. Now understand one more thing. This was applicable to resident as well as non-resident, which means if you are a non-resident, still you are going to get a benefit of 2,50,000. ऐसा नहीं कि नॉन रेसिडेंट चल तुझे नहीं बेनिफिट दूंगा, ऐसा नहीं है. एवरीबडी विल गेट 2,50,000 का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. बट दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. आई विल कम टू द सेकंड पार्ट. इफ यू आर अ रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, what is the meaning of senior citizen? Senior citizen is 60 years or more than 60 nahi, 60 years or more, but less than 80 years at any time during the previous year. Then in that case, the limit of 2,50,000, the basic exemption limit of 2,50,000, it will be extended to 3 lakhs.
Rest everything will remain the same. So basically earlier we used to do 0 to 2.5 nil. Now we will do 0 to 3 lakh nil. 3 to 5, 5%. 5 to 10, 20%. More than 10, 30%. वो सेम रहेगा सर. करेक्ट है. बट इधर एक कैच है. कैच. This extended limit of basic exemption limit is applicable only to resident senior citizen. If you are a non-resident senior citizen, I am 79 years of age, still I will get the basic exemption limit of 2,50,000. Perfect. पक्का एकदम. ओके. सो और एक होमवर्क के लिए लिख देना. कुछ नहीं, 5-5 मिनट में हो जाएगा तुम लोग का होमवर्क. टोटल इनकम is 45 lakhs and age 75. क्वेश्चन 6 आने वाला और एक फर्स्ट डे पे. ठीक है. सो अभी इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कम्स फॉर रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन. सुपर सीनियर सिटीजन इज 80 years and above at any time during the previous year. अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, दिस इज एप्लीकेबल टू रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन. कौन है ये सुपर सीनियर सिटीजन? जिनका एज इज 80 years and above. 80 years and above. 80 years and above. सीनियर सिटीजन 60 years and above, not more than 60. थोड़ा सा आराम से करेंगे ये चीज. राइट. So here the limit is not 2.5, the limit is not 3 lakhs, the limit is directly what? 5 lakhs. The basic exemption limit is 5 lakhs. Basically the entire gap of entire slab of 5% is gone. Rest everything is the same. So up to 5 lakhs it is 0 nil. 5 lakh 1 to 10 lakhs it is 20. Above 10 lakh 30. Calculation remains the same. Calculation में कुछ फर्क नहीं है. I have one question. I am 89 years of age, non-resident. What will be the basic exemption limit? I will repeat. I am 89 years of non-resident. What will be the basic exemption limit? 3 lakhs, sir. 2.5. 2.5. 2.5. Extended limit I will not get. I will get only 2.5. Why? Because I am a non-resident. I am a non-resident. Okay. So this again, just write one note. क्वेश्चन 6 पहले लिख देना. एक मिनट रुको. क्वेश्चन 6 पहले लिख देना. टोटल इनकम 39 lakhs, age 145 years. Age is 145 years. Okay. Just make one note. You can write anywhere. Okay. You can write anywhere. Note. Extended basic exemption limit, that is rupees 3 lakhs and rupees 5 lakhs. Down arrow is applicable only to residents and not to non-residents.
Can you try solving this? Just write the basic exemption limit. Now I know you know how to present the answer and how to solve. Done. Let's check. Okay. Age 29 non-resident. Age 29 non-resident. 2,50,000. Easy. Age 62 resident. 3 lakhs. Age 63 non-resident. 2,50,000. Why? Because he's a non-resident, right? Age 14 non-resident. Easy. Age 89 resident. Easy. Age 80 resident. 5 year. Age 1191. Age 1191 resident. Age 1930 non-resident. Perfect. Did you get a feeling? हाँ यार कितना easy है. You should get that feeling with everything. You should be so comfortable with the concept that you should get a feeling कि हाँ यार ये तो मुझे मालूम है, चलो आगे चलो अभी. Right? So now you will never go wrong in this concept, that is for sure. Okay? ठीक है? Okay, great. I think we did till here. So individual का देखा in 3 situations. First one resident, non-resident, less than 60, more than 60, less than 80, and more than 80. We did the tax rates for these. So I think we will stop here for today. For today, it is sufficient. So before moving ahead or before stopping the lecture, we'll just have a quick recap of what we did today. Okay, quickly हम recap लेंगे और ये everyday करेंगे. First of all, we started with syllabus क्या है, direct tax, indirect tax, what is tax and why do we need tax, इसके बारे में हम लोग ने देखा. Then we understood what are the types of taxes, like sources of revenue I understood, but what are the types of taxes? First is direct tax and second one is indirect tax. Direct tax में why income tax is known as direct tax, this we understood, why income tax is known as direct tax and why GST is known as indirect tax. Ultimately, you tell me who is going to pay the tax. Ultimately, I am only required to pay the tax. But the person who goes to the government and pays the tax is different. That's why I'm paying tax directly, that is income tax. I pay tax indirectly through Vijay Sales, that is GST, that is indirect tax, right? Okay. Then we are going to learn law or act. As I told you, we are going to learn law or not only act. Law में act आएगा, rule, notification, circulars, case laws, etc. and etc. ठीक है.
After that, who has given the power to the government to levy taxes? Constitution of India. There are 3 lists. First is union list, state list, and concurrent list, right? After that, uh, government can levy taxes on all the incomes except for agricultural income. Central government के पास power ही नहीं है टैक्स लगाने के लिए एग्रीकल्चरल इनकम पे. आफ्टर दैट नेम क्या है? इट इज एप्लीकेबल. सेक्शन के साथ साथ हम लोग समझेंगे. इट सेक्शन 1 इज इन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन. सेक्शन 3 पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर मतलब असेसमेंट ईयर का पिछला साल, दैट इज प्रीवियस ईयर. परफेक्ट है. द ईयर इन विच असेसमेंट हैपेंस, दिस इज नेक्स्ट ईयर, दैट इज असेसमेंट ईयर. नाउ इफ आई से financial year 20, okay, sorry, if I say previous year 21-22, can I say this is equivalent to assessment year 22-23? Basically, if I refer to both, this both mean the same. I'm referring to financial year 21-22. In the exam, they can give you assessment year 22-23, but we will convert it into financial year because we are more comfortable with the financial year. Let them give an assessment year, चलेगा, पर हम लोग immediately क्या करेंगे? Convert करेंगे financial year में. एकदम पक्का क्लियर है. उसके बाद आता है सेक्शन 4. सेक्शन 4 में मैंने बता दिया. सेक्शन 5 में लिखा है दैट दिस इज द स्कोप ऑफ टोटल इनकम. After that, we see section number 14 to determine that there are 5 heads of incomes. All the incomes, we bifurcate that income, those incomes in 5 heads of incomes. And then we compute the income. On that income, we pay the tax rate. We are learning how to compute the tax rates only, or how to compute the tax only. Right? After this, we started with how to compute the tax for an individual HUF, AOP, BOI, artificial juridical person. Not firm, not company. देखा नहीं है अब तक. Now, there are 3 parts. One is 0 to 2.5. Okay, sorry, 3 parts. First part is resident as well as non-resident whose age is less than 60. How to compute the tax? 0 to 2.50. 2.5 to 5 it is 5%. 5 to 10 it is 20. There is no 10%. And above 10 it is going to be what? 30%. If your age is 60 years and above but less than 80 years, then in that case the basic exemption limit of 2.5 will be extended to 3 lakh rupees. But this extension is applicable only and only to residents and not to non-residents. For a non-resident it will be 2.5. Perfect. After that, if your age is more than equal to or more than 80 years, then the basic exemption limit will be extended to 5 lakh rupees. But either understand one thing, that the first bracket of 5% is gone now. It is always from 20 and 30. Correct. And this extended limit of 5 lakhs is applicable only and only to resident persons. After you compute the tax, don't forget to add the health and education cess, because that is compulsory. Nobody's asking you ki, do you want to apply? No, you have to compute 4%. And everybody forgets this at inter-executive level and final level, the professional level. Everybody forgets to add health and education cess. If you are going for an MCQ में 2 options दिए होंगे. एक option होगा which you are going to compute without health and education cess. And there is going to be one option that is with health and education cess. Out of 100 students, 90 students will go for without because they have computed the tax. And this happens. हम लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे. Perfect है. I hope you are clear. एक चीज मुझे दिखाना बाकी रह गया था, ये that I told you no that government spends a lot of amount. Okay, इसमें एक चीज था, गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे आएगा? We understood that government gets the funds in the form of taxes. But is our taxes only source of income for the government? No. उसके ना 3 अलग अलग सोर्सेस है. सबसे पहले, you know, there are some government companies also, government organizations, ONGC, Indian Oil Corporation. तो ये क्या है? गवर्नमेंट कंपनीज, उससे पैसा मिलता है. बट इज दिस सफिशिएंट? गवर्नमेंट कंपनी से जो पैसा मिलता है वो नहीं. सेकंड इज व्हाट? टैक्सेस. एंड थर्ड इज व्हाट? लोन.
major component is loan. लोन से पैसा लेता है गवर्नमेंट. Now you'll say कि ऐसा कितना लोन लेता होगा गवर्नमेंट? I'll show you, like it's here. Yesterday only I downloaded this data for the latest quarter. I downloaded this data. If you see, total guaranteed debt is how much? Okay, इधर देखो, total debt देखो. Total debt is this. Just look at the debt. ये क्वार्टर का है. सो ऐसा लोन लेते हैं. तो लोन लेना पड़ता, तो बेसिकली इसीलिए तो बोलते हैं ना, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया. व्हाई मेक इन इंडिया? बिकॉज द टैक्सेस विल गो. सी, मेक इन इंडिया होने से होगा क्या? कंपनी विल अर्न इनकम, कंपनी विल पे हायर टैक्सेस. कंपनी का ऐसे इनकम कमाएगा क्या? नहीं, देयर विल बी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. सो पीपल विल गेट द एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो. व्हेन दे गेट द एम्प्लॉयमेंट, दे विल अर्न सैलरी ऑल्सो. व्हेन दे विल अर्न सैलरी, they will pay income tax also. So this is how make in India will, if you make in India and if you sell in India, this is the benefit. What do you think? दुबई में इनकम टैक्स नहीं है. दुबई में इनकम टैक्स नहीं है तो कैसे चलता है पूरा दुबई? इतने सारे बेनिफिट्स दे के रखे हैं, बाकी सब महंगा है ना दुबई में. दे चार्ज इनडायरेक्ट टैक्सेस. इनडायरेक्ट टैक्सेस से पूरा उनका दुबई चलता है. कॉर्पोरेशन टैक्स होते हैं उनके, इनकॉर्पोरेशन के. तो ये सब. So this is how the entire economy works, right? So I tried my level best to give you a brief about everything, like how the economy works, कैसे taxes collect होते हैं क्या. I hope you are clear. कुछ भी doubt होगा तो I'm there. You can put it on the group. कुछ भी doubt होगा तो भी, अभी first lecture में तो doubt नहीं होगा, पर आगे जाके कुछ भी doubt होगा, just you have to do one thing. You have to just click a photo. Whatever will be your doubt, you can text or you can audio record and you can send the recording on the group or maybe on my personal email, personal here number. Perfect. Great. It was a good session. I hope you enjoyed the session. I hope this was helpful somewhere. Perfect. We are going to have fun. So give me 2 to 3 days. थोड़ा सा ट्रैक पे आने दो. After that, we are going to have some different discussions in taxation. As I told you, how people used to evade taxes. कैसे टैक्स का चोरी करते थे. मैं टैक्स का चोरी करना नहीं सिखाऊंगा. I will just tell you that वो लोग कैसे करते थे and how government acted upon that. ये सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले आगे के सब लेक्चर्स. आई होप यू विल एंजॉय ईच एंड एवरी लेक्चर. कुछ भी अगर होगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, विदाउट हेजिटेशन मुझे पूछो, डाउट्स आएंगे. ठीक है, परफेक्ट है. ओके, आज का सेशन कैसे लगा? प्लीज टेल मी इन द बाय सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज. I would love to hear your comments on today's lecture. I will see you tomorrow, same time, 6 o'clock. Till then, bye-bye. See you. Take care. See you tomorrow. Bye, sir. Thank you. Bye, bye, bye. Thank you.